Waiting for Rishika. So write a few points. So in general, we can say that if I have alcohol, which is ROH, in the presence of H2SO4 and 14 Kelvin में लिखने चलेगा हम. It will give you ROR. Okay. So the ether will have double the number of carbon atoms as in alcohol. Okay. So we'll write a few points. First point, ether is having same alkyl group on either side of oxygen atom is called symmetrical ether. It's called symmetrical ether. Second one, dehydration of alcohol with concentrated H2SO4 at 413 हम लिख रहे हैं फर्स्ट टेक्स्ट में 413 है ना एनसीईआरटी में 414 आप याद रखिएगा गिव्स symmetrical ether. Gives symmetrical ether. So for example, if I have CH3OH ठीक है CH3OH and in the presence of H2SO4 at 414 Kelvin will give you CH3O and then again a CH3. Similarly, if I have two carbon atoms and OH, then the same with the same reagents, I will get two carbon atoms, oxygen, and then again two carbon atoms. Thirdly, if I have, let's suppose, three carbon atoms like this, and then OH, then I will get with these particular reagent, I will get 1, 2, 3 carbon atoms, the oxygen, and then the 3 carbon atoms. Please copy this down. Raise your hand once you're done. Hello, Harsha, am I audible? Harsha, am I audible? Waiting for Harsha. Let me know once you're done. You'll be able to make the products, no? क्या ख्याल है बताइए? ज़ायदा रिश्ता वैसे इसमें बहुत आसान आपको मिलेगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं मिलेगी. You will always get 1 degree alcohols only, है ना? Because 2 degree और 3 degree में क्या होता है? Elimination होने लगता है because of hindrance. Harsha, am I audible? Yes, sir. What happened, Harsha? How are you? कल आप नहीं थे क्लास में? Yes, sir. I forgot to join. You forgot to join. Yes, sir. Take a screenshot. लेक्चर मान लीजिएगा आप lecture. Take a screenshot for this. Done? Yes, sir.
Lightning mechanism. Mechanism is here. What reaction we are taking? We are taking this reaction. CH3, CH2, which in the presence of H2SO4 at 413 Kelvin gives you CH3, CH2, O, CH2, CH3. Okay? The first step is protonation of alcohol. Protonation of alcohol. क्या होगा यहाँ पे? You have CH3, CH2, OH plus. Because we are in acidic medium, you will have a lot of H plus ions, right? Lot of H plus ions. तो ये आपके पास जो ऑक्सीजन के न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन है, these will attack on the H, and you will get. I will make the bond line यहाँ पे, not like CH3, CH2 always. You'll get two carbon atoms, the oxygen atom here, and there are two hydrogens. पहले से एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आ गया, so it will get a positive charge because it has donated the neutral electrons. Second step में देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा आराम से. The second step, there is attack of nucleophile. Attack of nucleophile. ठीक है, attack of nucleophile में क्या होगा? You will have the ethanol. And so नहीं है that all the ethanol will react with H plus. There will be some ethanol left. That ethanol left, it will attack on this particular carbon atom. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. This is positive. So this carbon atom will be having a highly delta positive charge because it is connected with the electronegative element oxygen. The oxygen itself is having a highly positive charge. है ना? It is having a complete positive charge. तो क्या होगा? यहाँ से ये attack. This oxygen atom will attack on this carbon atom. As soon as it attacks on this carbon atom, this oxygen will take the bond pair of electrons and leave as one. अब आपके पास क्या बचा? You will have this whole thing. है ना? तो बना लेते पहले. Oxygen there, और oxygen के साथ एक hydrogen है. So that hydrogen is still there. And then it has attacked on this carbon atom. And उसके बाद एक और carbon atom attached है. So two carbon atoms here. ठीक है? To show you more properly, I am using some colors. मान लीजिए आपके पास हमने रेड कलर कर दिया. This is red thing. So this fragment is the red fragment. ये fragment आपके पास कौन सा red fragment है? And let's suppose this was blue. Blue नहीं, green कर देते हैं. ठीक है? So this is the green fragment that is red. मतलब ये है basically green fragment है ना? And this bond is because of the attack of oxygen atom. Make sense? दो carbon atom. Yes or no? Does this make sense? Yes or no? हाँ या ना, जल्दी बताएं. So oxygen will again get a positive charge because it has lost a. Next, this third step is deprotonation. Deprotonation. Deprotonation में यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड H जो है निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? बिकॉज सी H2SO4 में आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट H प्लस और आपको मिलेगा HSO4 नेगेटिव. HSO4 नेगेटिव. नाउ आइदर दिस HSO4 नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट द H प्लस. ठीक है, या फिर क्या होगा? यू हैव मेनी अल्कोहल्स, और अल्कोहल भी क्या है? It is electron rich, that can also attack and abstract. This hydrogen can go on. Yeah, आराम से निकलेगा because वो negative भी, and you have alcohol which is having oxygen which is having low. तो यहाँ hydrogen को निकाल सकता है आराम से. You will get two carbon atoms oxygen and then two carbon atoms. Plus you will get H. By the way, let me know if my voice is not clear, है ना? The internet में unstable है. Please let me know if my voice starts lagging or so that I can adjust. Dental here is something tell me. Dental here कहाँ से होगा? समझ में आया तो ये बताइए पहले. Understood? The three steps. चलिए, copy this down. आपके सिलेबस में काफी सिंपल मैकेनिज्म्स हैं, कुछ खास मैकेनिज्म्स हैं नहीं, लेकिन इन्हीं को ना बार बार आप करते रहिएगा तभी याद होगा. Copy this down. Let me know once you're done. You can see that oxygen with lone pair electron, it is attacking on the carbon atom.
So it is a nucleophilic substitution reaction, and because there is no formation of carbocation, we can say that it is SN2 reaction. ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे remarks में. Waiting for Rishita and Harsha. Waiting for Harsha. Write some remarks. ठीक है, remarks में number 1. It occurs via SN2 mechanism. It occurs via SN2 mechanism. ठीक है, SN2 mechanism से होता है. Therefore, we can say that ये थोड़ा सा पागल हो रहा है. एक से डबल चल रहा है. Let's wait. Can you see the screen? Yeah, screen visible line is. Therefore, we can say rate of reaction. क्या होगा? methyl alcohol CH3OH will be fastest because static tendency यहाँ नहीं. उससे कम static tendency क्या होगा 1 डिग्री में, उससे कम होगा इसमें 2 डिग्री में, उससे कम इसमें होगा 3 डिग्री. ठीक है, अब 2 डिग्री और 3 डिग्री में static tendency इतना हो जाता है. It doesn't show this action, right? 2 degree and 3 degree alcohols give significant amount of alkene with ether as they are more hindered. As they are more hindered. Therefore, this is not suitable for the preparation of symmetrical ethers using 2 degree और 3 डिग्री है ना. 1 डिग्री तक चलेगा, 2 डिग्री चलेगा, यानी कि आपको सवाल की क्या आ जाएगा, आसान आ जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा. The third point is more important. यहाँ से ज्यादा बहुत सवाल आते हैं. Please write. This MOP, this method of preparation is not suitable. Is not suitable for the preparation of unsymmetrical ethers. Because it would require
two different alcohols and lead to formation of mixture of ethers. Mixture of ethers difficult to separate. Difficult to separate. ठीक है, so copy कर लीजिए पर, है ना? Please copy this 3 points. Then I will explain the last. I think the first 2 points are self-explanatory according to the mechanism. Third step है ना, third वाला जो point है वो मार्क अच्छे से explain करता हूँ, आराम से लिखिए, रिसेप्ट में आंसर हो. Waiting for a shoot answer. Just waiting for Rishita. Rishita answer. ठीक है, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा माइक ऑन कीजिएगा ना. I need your help right now. ठीक है, ध्यान. सबसे पहले अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई हैव, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन एटम है ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास 1 कार्बन एटम है CH3. तो दिस इज अनसिमेट्रिकल. ये सोनो प्लीज मी, जल्दी बताएं. अनसिमेट्रिकल है, हाँ या ना? यस सर. ठीक. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अल्काइल ग्रुप, दिस, ये हम कहां से ला सकते हैं? वी कैन हैव दिस अल्काइल ग्रुप फ्रॉम 2 कार्बन एटम वाला अल्कोहल. सही है, हाँ या ना? यस सर. ये फ्रैगमेंट कहां से आएगा? ठीक है, और ये फ्रैगमेंट कहां से आएगा? फ्रॉम 1 कार्बन एटम वाला अल्कोहल, दैट इज CH3OH. इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तभी जाके ऐसा ईथर मिलना चाहिए. क्या ख्याल है गाइस? रिशिता, ज़ैना एंड हर्षा, मेक सेंस? यस सर. यस. यस सर. ठीक. Then let us suppose we have, लिखा नहीं है कुछ भी, we have ethanol and we have methanol. The presence of H2SO4 and with some heat, 413 Kelvin. ठीक है, ध्यान दीजिए. And the ethanol will not wait for methanol, no? कि methanol आएगा, हमसे टकराएगा, तब हम क्या बनाएंगे? ऐसा unsymmetrical ether बनाएंगे. What will happen? Ethanol, what will happen? Many of the ethanol, they will collide with other ethanol and they will make a product which is 2 कार्बन एटम, फिर O, फिर 2 कार्बन एटम. मेक सेंस? ये सुनो प्लीज बताइए. यस सर. There will be some ethanol ना, जिसको तो पता भी नहीं होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर मिथेनॉल है. Right? They will not even see the face of methanol. There will be some ethanol such. अब उसी तरह से कुछ होंगे, there will be some methanols which will not even see the face of ethanol. They will not strike with them. They will strike with themselves, make a ether which is CH3, OCH3. Now there will be some ethanol which will meet methanol, and both of them, they will react with each other and they will give you a product which is like this. Okay, but we needed only single product, and now we are getting multi product, and all these are ethers. All of these are approximately non-polar. सबके boiling point almost क्या होंगे? बहुत ही नजदीक होंगे. So they will be very difficult to separate. बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? Separation में मुश्किल हो जाएगी. That is why this is not a preferred method of preparation, suitable method of preparation for unsymmetrical ethers. अब इसी को जानते हैं सवाल में कैसे दिया गया था. सवाल में ऐसे दिया जाता है. ठीक है, आपको समझ में आया ना? क्यों नहीं कर सकते? हाँ या ना बताएं. Why this method is not suitable for unsymmetrical ethers? समझ में आया सबको? जी बताएं.
Yes. Yes. रुचिता, sir. हर्षा एंड जायना, अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको अभी ये लग रहा हो कि सर हमको तो एक चाहिए था, तीन तीन मिल गया तो अच्छी बात ना है? जायना, आप बताएं, डू यू फील लाइक दैट वी नीडेड वन बट वी गॉट थ्री, सो व्हाट्स बैड, द मोर द मेरियर? ऐसा ही तो है शायद कुछ फ्रेज, आपको ऐसा लग रहा है क्या? No, sir. पक्का? बहुत थोड़ा लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है बताइए? अरे कुछ देखिए, लॉजिकल आंसर्स हैं सबके, ठीक है ना? आप बताइए पहले, व्हाट डू यू फील? अच्छा ही तो है, तीन प्रोडक्ट मिल गए, ऐसा लग रहा है क्या आपको? Sir, your voice is नुकसान क्या है इस? माय वॉइस इज ब्रेकिंग। व्हाट अबाउट अदर्स? रुचिता, है इसमें वॉइस ब्रेकिंग? Yes, sir. अबाउट नाउ, इज इट एनी बेटर? Yes, sir. ठीक, तो डिजाइन आपको समझ में आ गया ना, पक्की बात? आगे बढ़े हम लोग? Yes, sir. ठीक है, सवाल आएगा ऐसे, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई बाइमोलिक्यूलर dehydration dehydration is not appropriate for the preparation of ethyl methyl ether। ऐसा सवाल है, ठीक है? सवाल को समझिए, बाइमोलिक्यूलर मींस वी आर यूजिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बस सही सवाल होते हैं अनसिमेट्रिक लिंक्स के लिए, क्यों, ये क्या है? इज नॉट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप ये जवाब दे देंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर की जगह क्या लीजिएगा? इथाइल ईथर, बिकॉज इट वुड रिक्वायर टू डिफरेंट अल्कोहल्स एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ईथर डिफिकल्ट टू सेपरेट। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अगला सवाल नहीं माय बैड। नेक्स्ट टॉपिक, द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तीन नियम रिएक्शन है एंड यहीं से बहुत ज्यादा सवाल आता है, सवाल आता ही आता है, ठीक है? यहाँ से Sir, बहुत सवाल मतलब सवाल। और अच्छा, can you scroll up once? नहीं, कुछ Can we write सवाल the देखने question? को। हाँ हाँ, देखिए देखिए, सवाल देखिए। ऐसे बोर्ड में एक बार सवाल भेज दो तो बच्चे थोड़ा परेशान हो गए, सर क्या ही बोलते हैं, कुछ तो बायोमोलिकुलर डीहाइड्रेशन पता नहीं क्या है। आई एम जस्ट राइटिंग द हेडिंग, आप ऐसे घबराइएगा नहीं। फ्रॉम एक और नाम होता है इसका, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। टॉपिक हो गया, टॉपिक लिख लिया आप लोगों ने? Yes. अब यहाँ पे आप लोग साथ साथ करेंगे, ठीक है? प्लीज राइट विथ मी, व्हेन haloalkane when haloalkane is is treated with suitable sodium alkoxide with suitable sodium alkoxide and SN2 reaction takes place, forming corresponding ethos, corresponding ethos। तो सबसे पहले
आपको एक तो हैलोजन चाहिए और क्या चाहिए, एल्कोक्साइड। वैसे एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड मिलेगा कैसे, आप अल्कोहल लीजिए, इसमें क्या ऐड कर दीजिए, सोडियम ऐड कर दीजिए, अब क्या मिल जाएगा, विल गेट RONE प्लस H2 गैस है ना, प्लस H2 गैस, ठीक है, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। अब क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है आपके पास RONE प्लस some alkyl halide R dash X, है ना, both of these alkyl group could be same, could be different, है ना. Now, this halogen atom is more electronegative. That is why it will be pulling electron density from the carbon atom, and this carbon atom will be getting a delta positive charge. The oxygen atom, which is having lone pair electrons, it is going to attack on the carbon atom like this, and this halogen atom will leave. और इस halogen atom को कौन पकड़ लेगा, सोडियम पकड़ लेगा, है ना, क्या. So basically R as it is from the alkoxide, O as it is from the alkoxide, इसके साथ कौन जुड़ गया, R प्लस NaX. बात समझ में आई, हाँ या ना बताएं. रिश्ता हर्षा एंड जायना मेक सेंस, यस नो? Yes, sir. Sir, what is sodium alkoxide? सोडियम alkoxide. Okay. अगर CH3 हो जाएगा तो methoxide, methoxide. Waiting for connection. सबका हो गया, ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. Sometimes now Zoom does not notify me for both data if I'm silent for too long and I'm waiting for you guys. For example, अभी आप से देखिएगा, don't write anything, ठीक है. There are multiple ways in which they can ask question, give you the reaction of different meters. सबसे पहला देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं, ठीक है, and then they will say this alcohol it is reacting with, सबसे पहले ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, और उसके बाद ये रिएक्ट कर रहा है सेकंड नंबर में मान लीजिए CH3Br के साथ, ठीक है. तो यू नो दैट इससे क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड. और आपको ध्यान रखना है दैट द ऑक्सीजन, ईथर का जो ऑक्सीजन है उसको इथेरियल ऑक्सीजन कहते हैं, इथेरियल ऑक्सीजन, दैट इथेरियल ऑक्सीजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है. आप अल्कोहल को एज इट इज बना दीजिएगा विदाउट दी OH. ऑक्सीजन शुड हैव टू बॉन्ड्स, दूसरा बॉन्ड किसके साथ होगा, द अल्काइल ग्रुप ऑफ हैलोहाइड. यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे CH3 रख जाएगा, ठीक है. तो सिमिलरली देखिए दूसरा एग्जांपल दूंगा, तो देखिए फॉर एग्जांपल दे कैन आल्सो गिव यू समथिंग लाइक दिस ONA, है ना, ONA और टू कार्बन एटम्स एंड Br. यहाँ पे भी
the sodium alkoxide है, and in this case it is ethoxide, that will be as it is with the oxygen atom. और उसके बाद क्या मिलेगा? The alkyl group on haloalkane. The alkyl group on haloalkane is what? It is what? Having two carbon atoms. तो वहां पे भी दो कार्बन आटम ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है? और देख लीजिए थर्ड केस में, let us suppose we have something like this. ON plus we have two carbon atoms and Cl. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास NABR, NaCl बनेगा उसको नहीं लिख रहे, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन तक पार्ट है ना उसको ऐसे लिख देना अभी, एवरीथिंग एज इट इज, ठीक है? टिल ऑक्सीजन। और फिर इसी ऑक्सीजन पे क्या लगेगा? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? टू कार्बन एटम्स, ये एक कार्बन दो कार्बन। सिमिलरली यू कैन हैव ऑक्सीजन Na plus let us suppose we have CH3 Br। ऑक्सीजन वाला पार्ट एज इट इज, बिल्कुल सब कुछ वैसे का वैसे, विदाउट दी सोडियम ऑक्सीजन तक। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसमें एक CH3 आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ मतलब ऐसा केस तो जनरली नहीं होता है। जो हालो एल्केन ना, वो दैट इज जनरली 1 डिग्री ओनली, बिकॉज SN2 रिएक्शन है तो 1 डिग्री ही लिया जाता है हालो एल्केन को, वो बाद में पॉइंट पे दिखाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इट विल बी ऑक्सीजन दो कार्बन, वन कार्बन टू, ठीक है? अभी अंडरस्टूड ना, ये सुनो जितना जाना है हर्षा, Yes, sir. ठीक है? लुक Yes, एट sir. दिस, द 5 डिफरेंट रिएक्शन दैट वी हैव रिटन, और कोशिश कीजिएगा यू राइट द क्वेश्चंस एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट्स ऑन योर ओन, है ना? और सही सही प्रोडक्ट बनाइएगा, गलती मत कीजिएगा, डोंट मिस दी कार्बन हियर एंड देयर। Waiting for Japan also. Just wait for Japan. You will write some remarks. First point on remark is remarks. Williamson ether synthesis, that is WES, is an to where alkoxide, Sir, your voice is where breaking. alkoxide
How is it now with any better? Yes, sir. Now, guys, Williamson ether synthesis is an SN2 reaction where alkoxide is nucleophile and Rx is substrate. Rx is substrate. Therefore, the haloalkane, should be less hindered, should be less hindered. है ना, आपको हमने देखा था अभी कि आर ओ जो है एन ए, ये क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है किसपे, आर एक्स पे, ठीक है, इट इज अटैकिंग हियर because it is SN2, this haloalkane should be what, it should be less hindered, तभी ये अटैक क्या होगा, it will be very feasible, है ना. If we have a very hindered haloalkane, then what will happen, this R O जो है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए CH3 है, CH3 दिया है तो ये किस पे अटैक करेगा, RO नेगेटिव, इसी पे कार्बन पे अटैक कर जाएगा, है ना. बट लेकिन ध्यान दीजिए, if I have something like this, कार्बन है और कार्बन में और जुड़ेगा CH3. Then this oxygen atom, that is sodium ethoxide, sorry, sodium alkoxide के साथ है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, it will not be able to penetrate and attack on this carbon atom, सही है, वहां से तो कर नहीं सकता because of straight distance, it will attack on the hydrogen, और फिर कैसा शो कर देगा, it will show a elimination reaction forming alkene, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे. बट आपको ये चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजन शुड बी क्या, हाइड्रोजन शुड बी लेस हिंडर्ड, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है, टू फॉर्म unsymmetrical, ether, 1 degree ambient light, 1 degree ambient light should be used preferably. Third point, usage of 2 degree and 3 degree haloalkane leads to formation of alkene as they are more hindered, ठीक है, ध्यान दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, if I have something like this, oxygen, इस तरह से, ठीक है, तो you look at the alpha carbon, ठीक है, तो अल्फा कार्बन कौन कौन से होते हैं, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, दिस अल्फा इज 2 डिग्री, दिस अल्फा इज 1 डिग्री, है ना. आपको यहाँ से इतना पता चल जाएगा दैट दिस पर्टिकुलर 1 डिग्री वाला जो आ रहा है किससे आ रहा है, हाइड्रोजन से, और ये वाला दिस फ्रैगमेंट इज कमिंग फ्रॉम OH. बस समझ में आया ना फ्रेंड, कितना हल्का है रखा. You understood the logic? Like if you have been given an ether, how to identify that you have two different alkyl groups. एक alkyl group आपको sodium alkoxide से आएगा, the other alkyl group will be coming from the haloalkane. So the fragment which is less hindered will be coming from haloalkane. 1 degree less hindered rather than 2 degree. Makes sense, Rachna, Harsha and Saina? Right? Yes. ठीक है, copy कीजिए. So basically to get this particular product, क्या करना पड़ेगा आपको, you will have this reactant plus this, इन दोनों का पेयर कीजिएगा, आपको मिल जाएगा
this type of thing. Raise your hand once you're done. Waiting for Rishita and Harsha. Just waiting for Rishita now. ठीक है, ध्यान से देखिए। Next आपके पास है listen. If I want to make phenyl alkyl ether, phenyl alkyl ether क्या होगा? Benzene ring. When acts as a substrate, इसको phenyl बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और उसके बाद R। तो यहाँ पे दो मेथड है बनाने के लिए, या तो फिनाइल आए से एल्कोक्साइड से, या फिर फिनाइल किससे है, एलो एल्केन से है। ठीक है ना, दीस आर द टू डिफरेंट कंडीशंस और टू डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कैन मेक इट। ठीक है, प्लीज सी दिस वन नाउ। देखिएगा बस कुछ अभी, डोंट राइट नाउ। देयर आर टू वेज। पहला वे तो क्या है, वो हिंदी प्लस आर एक्स। ठीक है, दूसरा वे क्या है, आर ओ एन ई प्लस यहाँ पे बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन आटम अटैच हो। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या, हाइड्रोजन हटता है और ये ऑक्सीजन आटम इस पे छप जाता है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इन दिस केस व्हेन यू हैव अ हालो अरीन, यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा होगा, and this resonance will give you double bond character, and this double bond character will make it very difficult to break this halogen bond. That is why this reaction should not happen, ये reaction नहीं हो पाता है। So in order to make phenyl alkyl or alkyl या alkyl phenyl benzene, क्या यूज करना पड़ेगा आपको, you will use phenoxide and haloalkane। अब यहाँ से देखिए, दिस ऑक्सीजन एटम, ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करना, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बॉन्ड। वी वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, एंड यस दिस बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन बिकॉज़ ये सिंगल बॉन्ड है, पांच डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स में है ही नहीं। मेक सेंस, ऐसा कुछ नहीं। Yes, sir. इसका नाम ना ऐसे लिख लो, एल्कोक्सी, ऐसे लिख लो, बेंजीन लिख देते हैं, एल्कोक्सी बेंजीन लिख दीजिए इसको, आसान नाम, एल्कोक्सी बेंजीन। ठीक है, इसी के बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, एल्कोक्सी बेंजीन cannot be prepared using haloarine, because haloarine don't show SN2. Therefore, alkoxybenzene are prepared using peroxide and haloarine। ना haloarine हम लोग नहीं यूज कर सकते।
Raise your hand, what's done. ठीक है, ध्यान दीजिए, सवाल देखते हैं. Yeah, this is an NCERT itself. Write the names of reagents and equations for the preparation of following ethers by Williamson synthesis. हाँ, ध्यान दीजिए जरा, बहुत आसान है. क्या करना है सबसे पहले, you need to know how to write the product. ठीक है ना, ये सॉरी प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं. How to write the structure of this particular compound. अगर नाम से स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, then you will be facing difficulties. ठीक है ना. पहला वाला क्या है, there is one propoxy propane. One propoxy propane. Propane मतलब 3 कार्बन एटम, so we'll make 3 कार्बन atoms. And propoxy, that means in the first carbon atom, क्या आपके पास ग्रुप है, propoxy ग्रुप. 3 कार्बन एटम ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा. देखिए, this is your propoxy group. 3 कार्बन एटम के लिए prop, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, and this is your propane. Make sense? Yes or no, please tell me. ना बताएं. Yes. Now you can also see that both of these carbon atoms are 1 degree, मतलब symmetrical है बिल्कुल. ये तो है ना. प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास क्या हो, unsymmetrical. In the case of symmetrical, what you can do, 1 2 3 carbon atom ONA plus 1 2 3 carbon atom Br, इन दोनों को रिएक्ट कर दीजिए. क्या ख्याल है, बन जाएगा आपके पास क्या, 1 2 3 कार्बन एटम ओ 1 2 3 कार्बन एटम. बाकी लोगों को समझ में आया, हाँ या नहीं, जल्दी बताएं. गुरु भाई, Yes. पुष्पा, सुनैना. Yeah. पुष्पा. ठीक है, दूसरा देखिए, इथॉक्सी बेंजीन. इथॉक्सी बेंजीन में क्या हो रहा है, आपके पास बेंजीन नहीं है और यहाँ पे आपके पास O और 2 कार्बन एटम हो गए, इथॉक्सी. ठीक है. तो जब भी आपके पास एल्कोक्सी बेंजीन है, तब तो यहाँ पे बस एक ही केस है कि फेनॉक्साइड यूज करना पड़ेगा आपको. बेंजीन वाले के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ONA, फेनॉक्साइड. देयर इज नो अदर केस. और यहाँ पे 2 कार्बन एटम के लिए कैन हाल के क्या बन जाएगा इससे, O 2 कार्बन एटम. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, अब ऐसे आपको बताइएगा. थर्ड नंबर देखिए, वी हैव 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन. प्रोपेन आ गया पहले, 1 2 3 कार्बन एटम्स. इस पर ऑक्सीजन लगा हुआ है और इस पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, दैट इज CH3. एंड दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम. ये सेकंड कार्बन एटम होगा, है ना. नहीं, 2 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, मैं 3 कार्बन एटम्स. सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी और मिथाइल भी लगा हुआ है, वो CH3. और यहाँ पे क्या है, CH3 भी है. ठीक है, बताइए यहाँ पे 2 फ्रैगमेंट है. देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम. ठीक है, लेस हिंडर्ड कौन सा है, चलिए हम आपको रंग देते हैं यहाँ पे. विच इज लेस हिंडर्ड, ये आपके पास ब्लू हो गया. एंड ये आपके पास CH3 जो है, दिस इज रेड. लेस हिंडर्ड कौन सा है, विच इज लेस हिंडर्ड, ब्लू और रेड. छोटा कौन सा है, मतलब भाई लेस हिंडर्ड कौन सा, जहाँ पे भीड़ नहीं रहा, you don't have much groups there. Ishita, Zaina and Harsha, बताइए which is less hindered, red or blue. डिग्री देख लो, डिग्री. Red. What is the degree of this carbon atom? Red वाला छोटा है ना, red वाला less hindered है, right? So red वाला कहाँ से आएगा, from haloalkane. Make sense? हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था ना, याद आ रहा है कि नहीं, to form unsymmetrical ether 1 degree alkane light should be used preferably. ठीक है, तो दिस ब्लू वाले फ्रैगमेंट को ऐसे लिख दो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए.
बिल्कुल ऐसी ऑप्शन तक ऑप्शन में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे प्लस CH3 भी यार क्या देगा वो CH3। ठीक है, ये फोर्थ वाला आपको सबसे कीजिएगा वन, अरे वन मिथॉक्सी थे ना, चलो ठीक है, तो फोर्थ वाला खुद से कर लो थोड़ा सा, डू इट एंड सेंड इट टू मी और व्हाट्सएप। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन के लिए सेंड द आंसर ऑन माय व्हाट्सएप। यस, वेरी गुड, अच्छा, बहुत सही। वेटिंग फॉर जायना एंड रिश्ता। वेटिंग फॉर जायना एंड रिश्ता। If you are facing difficulty, रिश्ता हर्षा जायना रिवाइज डन। Yes. रिश्ता तो हो गया, और बहुत रिश्ता एंड जायना, रिश्ता एंड जायना। ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड हर्षा। ये बताइए रिश्ता। हम्म। No, sir. क्या हुआ, क्या दिक्कत है? भेजिए ना, जो भी किया जल्दी भेजिए। यू डूइंग दिस वन ना, रिशिता? रिशिता, Yes, sir. बेटी मेक दी स्ट्रक्चर वन मिथॉक्सी इथेन, स्ट्रक्चर बना आपसे। No, sir.
नो भाई, इथेन बनाइए पहले 2 कार्बन एटम, उसमें मेथॉक्सी डालना है आपको, ज्यादा हार्ड नहीं है, कोशिश कीजिए हो जाएगा। जाइना, व्हाट अबाउट यू? जाइना, आपसे जाइना आप मुझे वो नहीं, तो पहले 1 मिथॉक्सी इथेन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको जाइना। What is the name of the compound that you have made, Zaina? Can you please check your mic on quickly? Yes, Zaina, mic on correct? yes, sir. ठीक है। What is the name of compound that you have made? Um, 1-methoxyethane. Sorry, what? जोर से बोलिए ना प्लीज। 1 minute. मिथॉक्सी कौन से है? ऑक्सीजन एटम के आइडल साइड में देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप्स। मिथॉक्सी कौन वाला, राइट वाला मिथॉक्सी है, लेफ्ट वाला मिथॉक्सी है? कौन सा मिथॉक्सी है? Which one is Left. मिथॉक्सी? The second one will be with लेफ्ट वाला मिथॉक्सी। the second one will Can be you with repeat that the please? What did you say? first नहीं one नहीं, will वो have नहीं हम पूछ रहे हैं यार, आप प्रोडक्ट। एक सेकंड। There are 2 alkyl groups on oxygen atom, correct है Zaina? एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, सही है? Yes, sir. ठीक है। मिथॉक्सी will have how many carbon atom? मिथॉक्सी 1 carbon atom. 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, सही है? Yes, sir. है ना? Yes, सो sir. विच साइड बताइए, राइट साइड वाला मिथॉक्सी है, लेफ्ट साइड वाला मिथॉक्सी, कौन वाला मिथॉक्सी है? Uh, Hmm? sir, right side as in, what are you asking? I'm asking मिथॉक्सी ग्रुप किधर है? यू शुड हैव द मिथॉक्सी ग्रुप ना। सर, पहले इथेन बनाना है, उस पर मिथॉक्सी लगाना है। हाँ सही है, बिल्कुल। हाँ ऋषिता, आपके स्टेप सही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप इथेन बना लेते पहले, है ना? आपने बनाया इथेन, 2 कार्बन आटम का इथेन बनाया, ठीक है? Yes. है ना? Yes, इस पे क्या लगाइएगा बताइए, जाइना बताइए क्या लगाइएगा इसमें? We have to put methoxy, oxygen हाँ, atom, मिथॉक्सी का क्या फॉर्म? हाँ उसके बाद and CH3, single bond CH. सिंगल बॉन्ड CH3, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तभी यहीं पे तो आपने जो बताया बनाया ना, दैट इज इथॉक्सी इथेन। आपने ये बना दिया है, जबकि स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ये का मतलब CH3। यानी सीधा डिफरेंट हो, सही है? जाइना, this will be methoxy methoxy इथेन। आवाज नहीं आ रही आपकी। Are you thinking? ये सुनो जाइना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. Am I audible to other guys? रिशिता and Harshit? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। रिश्ता जाइना आपको मैसेज करेगी। This is one fragment, ये एक alkyl group है। This is the second alkyl group. Which is less hindered, 1 or 2? Which is less hindered? 2. क्वेश्चन का आपका जवाब नहीं आ रहा। 2 is less hindered। तो CH3 कहाँ से आएगा? Haloalkane से आ जाएगा। And the rest of it will be coming from phenoxide, sorry, alkoxide, ON। नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड सी जाइना, इट इज नॉट गुड दैट यू आर राइटिंग विद पेंसिल, है ना? बिकॉज आपके नोट्स में आपकी गलतियां होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप समझिए इस बात को, लाइक वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग, आपको तो सारा नोट लगेगा कि ऐसा नोट्स लगेगा कि सब कुछ आता है आपको। कहीं पे अगर कट मार्क्स नहीं रहेगा, देन हाउ वुड यू नो दैट you did not understand this one, or you were not able to solve this on the first time? So only those questions you will be revising more intently, na?
जिस क्वेश्चन में आप क्या हुए थे, अटक गए थे, जो क्वेश्चन आपसे सही नहीं बना था, राइट? सो यू शुड राइट एवरीथिंग विथ पेन, और जहां पे कट लग रहा है वहां पे कट कीजिए उसको, ठीक है? बिकॉज अ नोट शुड नॉट बी ब्यूटिफुल, इट शुड बी रादर यूजफुल, ठीक है? कुछ आपको ऐसा तो नहीं ना किसी को सबमिट करना है नोट्स, बोर्ड से आपके नोट्स जाएंगे, वहां से आपको मार्क्स मिलेंगे, शुड बी यूजफुल टू यू। नोट्स का मेन मेन चीज तो हमको लगता है नोट्स की यही है, ठीक है ना? इफ यू थिंक दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग, यू शुड नो वेयर यू फेल डाउन, जहां पे भी आप गिर गए थे, जहां पे भी आपसे मिस्टेक्स हुए थे, यू शुड करेक्ट दोस मिस्टेक्स। और क्या ही फायदा, लर्निंग तो यही है ना, एक बार में जो चीज आगे सही से उसमें वो तो आई गई, तो नेक्स्ट टाइम भी आप सही कीजिएगा। और जनरली आप देखिएगा जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं वहां पे बार बार मिस्टेक नहीं होती, ठीक है? दैट कैन बी ओनली अवॉइडेड इफ यू अंडरस्टैंड कि तो भाई यहाँ मिस्टेक हुआ था, इसको फिर अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आपके नोट्स में ऐसे कुछ कट मार्क्स नहीं रहेंगे ना, आप सारे रिएक्शन को इक्वली देखिएगा कि सारे रिएक्शन को उतना ही इंपॉर्टेंस दें। लेकिन अगर कट मार्क्स रहेगा तो जहां कट रहेगा वहां पे आप उस क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ठीक है साइना? सो यू विल नाउ राइट व्हेनेवर आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, यू विल राइट इट विद पेन। आपको लॉजिक समझ में आया ना, है ना? यस सर। ठीक है? देखिए ऐसे मतलब बिल्कुल थोपने वाली बात नहीं है। अगर मतलब खूबसूरत नोट बनाने से अगर आपको मार्क्स मिलते हैं तो हम जरूर बोलते हैं कि खूबसूरत नोट बनाई, कहीं भी एक भी पेन इधर से उधर कट कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और इट इज नॉट रियली यूजफुल टू मेक दोस ब्यूटीफुल नोट्स जब आपको कुछ वो फायदा ही ना कर पाए, है ना, जब आपको मिस्टेक से ना बचा पाए। चलिए अगला एक सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स। You can see that there are a lot of wide type of questions which would be asked from this topic also, है ना? सवाल है डाई थर्ड ब्यूटाइल ether cannot be prepared by Williamson ether synthesis 1. Cannot be prepared by Williamson ether synthesis 1. ठीक है? But what is di-third butyl ether? A carbon atom which is bonded with three other carbon atoms. इसको बोलते हैं third butyl, है ना? Because it is what tertiary और there are four carbon atoms, तो butyl है, and it is bonded with oxygen, और इधर भी आपके पास यही है third butyl है, CH3 CH3 and CH3, ठीक है? Now this cannot be prepared by Williamson ether synthesis. Why? Because this reaction requires, मतलब एक fragment तो आप कहाँ से ले आइएगा? This fragment maybe you can come, one of the fragment may come from the alkoxide, लेकिन दूसरा जो fragment है वो आपको कहाँ से लाना पड़ेगा? It should be from the haloalkane, and if you want to use haloalkane तो आपको 3 degree haloalkane use करना पड़ेगा, right? For example, ये वाला fragment हम मान लेते हैं is coming from कार्बन, इधर इधर और इधर आपके पास मिथाइल है ना, MEM, राइट? शॉर्ट फॉर CH3 OMe, है ना? ये फ्रैगमेंट यहाँ से आ गया, प्लस ये वाला जो फ्रैगमेंट है आपके पास कार्बन इधर 3 मिथाइल MEME यहाँ पे दिया, ठीक है? सो दिस शुड बी वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड दैट शुड बी अनदर रिएक्टेंट। अब ये जो आपके पास कार्बन एटम, दिस इज व्हाट, दिस 3 डिग्री कार्बन, and we have seen that if you are going to use 3 degree haloalkane, then what will happen? It will result in the formation of alkenes, है ना? Significant amount of alkenes। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? This requires, this मतलब ये जो आपके पास ether है, this requires a reaction of 3 degree haloalkene with 3 degree alkoxide, which results in formation of alkene, alkene, ठीक है? अब इसी तरह से एक और है जो हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें शामिल है पहले पॉकेट कॉल, लेकिन वन से
We got for Ishita and Harshan. इसी तरह से you cannot make benzophenol. So not benzophenol. आप diphenyl ether नहीं बना सकते. For example, with this code. Okay, this could not be made. Why? Because this requires the reaction of peroxide with haloarine, but haloarine don't show acid. It is continuous physical properties. ठीक है, physical properties में आपके पास है R, देखिए, OR, ठीक है. You can see that this is going to have lone pair here, but this bond angle will be slightly larger. Approximately क्या होता है, this R group and this R group cancels out the dipole, and this particular ether it is slightly polar. So हम क्या बोलेंगे, it is slightly polar. It is not as polar as aldehyde and ketones, but ये हाइड्रोकार्बन की तरह नॉन पोलर भी नहीं होता है, थोड़ा सा पोलर होता है. So because it is slightly polar, please write ethers have lower boiling point than alcohol. Alcohol due to absence of hydrogen bond in ethers. Ethers के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, boiling point of ethers is slightly higher than hydrocarbons of similar molar mass. Why? Because ethers are slightly polar, hydrocarbons are completely non-polar. So ऐसे ethers का ज्यादा होता है. Next point, ethers are soluble in water as they can form hydrogen bond with water. Now, I hope all of you know that the requirement for the formation of hydrogen bond is there should be one species which has OH, OF, or ON type of bonding. Sorry, OH, FH, or NH type of bonding, and others will have a lone pair electron. हाँ? तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है. We have H, OH. This hydrogen atom of water molecule will be having a highly delta positive charge because it is connected with a more electronegative oxygen atom. तो वहीं पर आ गया आपके पास ROR. तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये नेगेटिव चार्ज है ही, and this hydrogen will interact with this oxygen atom, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is hydrogen bond in the base. Last point लिख लीजिएगा. Increase in number of carbon atoms. Increase in
number of carbon atoms. Decreases solubility. Decreases solubility. Waiting for Rishita, Harsha, and Saina. नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट आधे घंटे का बचा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बस एक ही रिएक्शन है एंड देन वी हैव द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइसो, बट दैट वन रिएक्शन इट हैज अप्रोक्सीमेटली 4 पार्ट्स, तो 4 अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा आपको, सो इट विल टेक मोर टाइम इवन व्हेन कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो कम टाइम लेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का बचा हुआ है दिस चैप्टर अल्कोहल्स।